Hello children, hope you all are fine. So let us begin with a new chapter, Pinocchio. Pinocchio is a puppet made by Geppetto. So here we will read the first paragraph. One day Geppetto, the wood carver, began making a puppet that he could make dance and run and leap like an acrobat. He named the puppet Pinocchio, a name he hoped would bring him luck. Imagine Geppetto's surprise when his puppet began to move and talk. He even ran away like a naughty little boy. So children, here one day एक दिन गेपिटो एक वुड कार्वर उन्होंने एक पपेट बनाना शुरू किया. अंडरलाइन द वर्ड कार्वर. कार्वर इज अ पर्सन हु कार्व्स a hard material into some usable form. He made such a puppet which he could dance and run and leap like an acrobat. So children, underline the word leap. It means jump high. Underline the word acrobat, which means performer of spectacular gymnastic feats. The person who performs in gymnastics. उन्होंने एक ऐसा पपेट बनाया जो भाग सकता था, डांस कर सकता था और हाई जंप्स कर सकता था जैसे कि एक एक्रोबैट. सो व्हाट ही नेम्ड दैट पपेट? ही नेम्ड द पपेट पिनोकियो. एक ऐसा नेम रखा जिनसे उनको लक मिलेगा. So now we can imagine Geppetto's surprise when his puppet actually began to move and talk. He even ran away like a naughty little boy. वो ऐसे भागता था जैसे कि एक शरारती छोटा लड़का हो. So one day a large cricket appeared at Geppetto's. He introduced himself to Pinocchio as a talking cricket. He warned the little puppet to be good and behave himself or he would be in great trouble. Pinocchio paid no attention to the warning. He enjoyed being naughty and only wanted to have fun and amuse himself. In fact, Pinocchio even chased the cricket with a wooden hammer because he did not want to listen to his advice. So one day what happened? A large cricket appeared at Geppetto's. Children, underline the word cricket. Cricket is a large green colored insect. एक दिन क्या हुआ? गेपिटो के आगे एक लार्ज ग्रीन कलर का इंसेक्ट अपीयर हुआ. So the insect introduced himself to Pinocchio as the talking cricket. That cricket warned Pinocchio so that he can be good and behave properly, otherwise Pinocchio would be in great trouble. The talking cricket warned Pinocchio to be good and behave properly. Pinocchio paid no attention to the warning. So what did Pinocchio do? He did not paid any attention to the warning given by the cricket. What he did, he always loved to enjoy being naughty and he always wanted to have fun and he amused himself. Children, underline the word amuse. It means cause to laugh. He always used to have fun and he amused himself. In fact, Pinocchio even chased the cricket with a wooden hammer because he did not want to listen to his advice. And at last, what did Pinocchio do? He underlined the word chase. So write down the meaning of chase. It is pursue so as to catch. What Pinocchio did, he wanted to catch the talking cricket with a tight wooden hammer because he don't want to listen to his advice. He don't want to listen to the cricket's advice. What advice he gave? He gave that he should be good and he should behave properly so that he should not be in any trouble. Pinocchio wanted to be like real boys and go to school. So Geppetto sold his coat to buy him a spelling book. Now what did Pinocchio wanted? He wanted like other boys are going to school, he should also go to school and he should behave properly.
And what did Geppetto did? Geppetto sold his coat. Geppetto ने अपना कोट बेच दिया ताकि पिनोकियो एक स्पेलिंग बुक खरीद सके. Now children, Pinocchio started out for school. He had only gone a short distance when he heard a lot of noise and came to a marionette show. Wanting to see the show, he sold his book to a passing merchant and used the money to buy a ticket. The marionettes realized that Pinocchio was not a real boy at all but a puppet. They shouted for him to join them on the stage. Now what did Pinocchio do? Pinocchio started for school. ही हैड ओनली गॉन अ शॉर्ट डिस्टेंस. वो अभी थोड़ा सा डिस्टेंस ही कवर किया था. एंड वॉट ही हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइजेज विच आर कमिंग फ्रॉम अ मैरिनेट शो. ही वॉन्टेड टू गो टू अ मैरिनेट शो. एंड वॉट ही सॉ देयर, ही सॉ दैट ऑल अदर puppets are also coming and they are pursuing Pinocchio. He should also come to the stage and watch that show. So wanting to see the show, he sold his book to a passing merchant and used the money to buy a ticket because Pinocchio wanted to see the show. And what he did for that, the book which he purchased, he has sold his book to whom? To a passing merchant. And the money which he received, he used that money to buy a ticket for the marionette show. The marionettes realized that Pinocchio was not a real boy at all but a puppet. Now what did the marionettes realize? The marionettes realized he was not a real boy but actually he was a puppet. So they shouted for him to join them on the stage. उन सभी puppets ने उसके ऊपर शाउट किया ताकि वो भी उनके साथ ज्वाइन कर ले ऑन द स्टेज. What a commotion they all made. The owner of the show was terribly angry and threatened to chop Pinocchio up for firewood for coming and causing a disturbance, but Pinocchio begged for mercy. So children, underline the first word in this paragraph, commotion. It means noisy confusion or disturbance. So when he entered the show, there was noise coming from all around. The owner of the show was terribly angry. What did the owner do? The owner of the show became angry upon Pinocchio and he threatened Pinocchio for firewood for coming and for causing such a disturbance over there. And at last Pinocchio begged for mercy. Pinocchio ने दया के लिए ओनर से भीख मांगी. ही प्रॉमिस टू लीव एंड नॉट टू कॉज एनी मोर ट्रबल. उसने प्रॉमिस किया कि वो वहाँ से चला जाएगा और बिल्कुल भी ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा. सो चिल्ड्रन, द वर्ड ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम. Then he told how Geppetto had sold his coat for a school book and he admitted that he had been very foolish to sell his book to buy a ticket for the show. Now he said he would try to be wiser if he could go home. Then Pinocchio told that how Geppetto has sold his coat for Pinocchio so that Pinocchio can purchase a school book. And he admitted, उसने ये मान लिया कि वो कितना मूर्ख है कि उसने अपनी बुक भी बेच दी टिकट खरीदने के लिए. And at last he said he would try to be wiser if he could go home. और उसने क्या कहा? Now he would try to become good and he wanted to go home. The marionette master listened and felt sorry for Pinocchio. Then he gave him 5 gold pieces to buy back the book and the coat. Pinocchio thanked him and promised to go straight home and try to act more wisely in the future. Then what did that master do? The master listened to Pinocchio very patiently and the marionette master felt sorry for Pinocchio. उस marionette master ने उसको 5 सोने की मोहरें दे दी ताकि वो अपनी बुक और कोट वापस ले सके, वापस खरीद सके.
एंड पिनोकियो थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस टू गो होम स्ट्रेट। पिनोकियो ने लास्ट में उसका थैंक्स किया एंड व्हाट ही डिड, ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया कि वो यहाँ से सीधा अपने घर जाएगा एंड ही विल ट्राई टू एक्ट मोर वाइजली इन द फ्यूचर, ही विल बिहेव गुड इन द फ्यूचर। He did not get very far before he met a lame fox and a blind cat. Knowing that Pinocchio had money, they pretended to be his friends and invited him to have dinner with him in a nearby inn. They had dinner and went to bed. वो अभी इतना दूर भी नहीं गया था कि रास्ते में उसको एक अपाहिज लोमड़ी और एक ब्लाइंड कैट मिल गए। नोइंग दैट पिनोकियो हैड मनी, दे प्रिटेंडेड टू बी हिज फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड हिम टू हैव डिनर विद देम इन अ नियर बाय इन। बिकॉज दे प्रिटेंडेड, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे वो पिनोकियो के दोस्त हों। सो वॉट दे डिड, दे इन्वाइटेड पिनोकियो टू देयर होम टू हैव डिनर विद देम एंड दे had dinner in a nearby inn. And at last they all went to bed for sleep. While Pinocchio slept, the fox and the cat, who were not really lame or blind at all, जब पिनोकियो सो गया तो वो जो फॉक्स और कैट थे जो एक्चुअल में ब्लाइंड नहीं थे और लेम भी नहीं थे, व्हाट दे डिड, दे वर्कड आउट अ प्लान टू रोब हिम ऑफ हिज मनी. They got up dressed in black to look like highwaymen and hid in the forest. They worked on some plan how they can steal Pinocchio's money. And what they did, they got up dressed in black to look like highwaymen and hid in the forest. उन्होंने ब्लैक ड्रेसेस में अब खुद को ड्रेसअप कर लिया, ठीक है, एंड वो जंगल में जाके छिप गए. When Pinocchio came past on his way home, the fox and cat were waiting for him and hung him from a tree to try to take his money, but he held it in his mouth between tightly clenched teeth. जब पिनोकियो वहाँ से उठने के लिए खड़ा हो गया, देन द फॉक्स एंड कैट वर वेटिंग फॉर हिम. वो फॉक्स और कैट उसकी वेट कर रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू हंग हिम फ्रॉम अ ट्री, और उसको एक ट्री से खींचने की कोशिश कर रहे थे. एंड दे वर ट्राइंग टू स्टील हिज मनी, बट वॉट ही डिड, ही tightly holded his money in his teeth. Underline the word clenched. It means to press tightly together, especially with anger or determination. Then Pinocchio ने अपनी मनी अपने दांतों में अच्छे से दबा कर रखी हुई थी. Pinocchio's garden fairy, a beautiful maiden with blue hair, lived nearby. Now what द स्टोरी हैड टर्न्ड हियर. फिर क्या होता है, पिनोकियो को कौन मिलती है, एक गार्डन फेरी, अ ब्यूटिफुल मेडन हुज हेयर इज़ ब्लैक एंड शी लिव्स नियर बाय. उसको एक यंग वुमेन मिलती है, अनमैरिड गर्ल मिलती है, हु लिव्स नियर बाय. She sent her dog to chase the cat and fox away and to bring Pinocchio to her castle. And what she did, वो अपने डॉग को भेजती है ताकि वो कैट और फॉक्स को वहाँ से भगा के आ सके एंड पिनोकियो को उसके कैसल में लेके आ सके. कैसल मीन्स a building which is very beautiful, a large medieval fortified building. She asked Pinocchio how he had got into such a muddle. He was ashamed to tell her the truth, but every time he told a lie, his nose grew longer, and he was horrified. When he changed his mind and told the truth, his nose went back to its normal size. उसने पिनोकियो से पूछा कि वो ऐसी ट्रबल में कैसे फंस गया. How he got into such a confusion. So every time Pinocchio was ashamed to tell her the truth. हर बार पिनोकियो को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता था सच्चाई बताने के लिए. But every time he told a lie and his nose grew longer. हर बार वो झूठ बोलता था और उसकी नाक फूल जाती थी. And he was very horrified. वो हर बार डर जाता था. When he changed his mind and told the truth, his nose went back to its normal size. जब उसने अपना माइंड चेंज किया कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सच बोलेगा, देन जो उसकी नाक होती थी वो उसी नॉर्मल साइज़ में वापस आ जाती थी.
Pinocchio, learning that lies will always be found out, promised to tell the truth and started for home. This time he met some mischievous boys who told him of a wonderful place where they could enjoy themselves as much as they wanted. It was a land of holidays, games, toys, cakes and candies. पिनोकियो ने एक चीज़ यहाँ पर याद रखी कि अगर हम झूठ बोलेंगे, अगर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, दैट लाइज विल ऑलवेज बी फाउंड आउट. झूठ हमेशा पकड़ा जाता है. एंड ही ऑलवेज प्रॉमिस्ड टू टेल द ट्रुथ एंड ही स्टार्टेड फॉर होम. उसने प्रॉमिस किया कि वो हमेशा सच बोलेगा और उसने घर की तरफ जाना शुरू कर दिया. तो इस टाइम उसको कुछ शरारती लड़के मिलते हैं हु टोल्ड हिम ऑफ अ वंडरफुल प्लेस, जो उसको एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं वेयर दे कुड ऑल एन्जॉय देमसेल्व्स एज मच एज दे वॉन्टेड, जहाँ पर वो खूब इंजॉय मस्ती कर सकते हैं. इट वॉज सो वॉट द प्लेस वॉज ऑल अबाउट. देयर वर हॉलीडेज, देयर वर गेम्स, टॉयज, केक्स एंड कैंडीज. So they all enjoyed with all these things. What they did not tell Pinocchio was that boys who got into trouble there were changed into donkeys and sent away. उन्होंने पिनोकियो से ये चीज़ छुपा कर रखी कि एक बार उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था. उनको भी एक प्रॉब्लम में फंसाया गया था. एंड वॉट देवर उनके साथ क्या हुआ था, उनको डोंकीज़ में चेंज किया गया था. एंड देवर चेंज इनटू डोंकीज़ एंड सेंट अवे, और उनको भेज दिया गया था. और ये चीज़ उन्होंने पिनोकियो से छुपा कर रखी. श्योर एनफ बिफोर लॉन्ग पिनोकियो हैड बिकम अ डोंकी एंड वॉज सोल्ड टू सर्किट. और उसके साथ भी वही हुआ जो उन मिस्चीवियस बॉयज़ के साथ हुआ है. एंड पिनोकियो को भी डोंकी बना दिया गया और उसको भी एक सर्कस में बेच दिया गया. ही वॉज टॉट टू डांस एंड जम्प थ्रू अ हूप. उसको भी कहा गया कि वो भी डांस करेगा और हाई जंप्स लगाएगा उस स्ट्रिंग के साथ. चिल्ड्रन, हेयर हुप मीन्स स्ट्रिंग, बट ही डिड नॉट परफॉर्म वेल. बट वो वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाया. ही बिकेम लेम एंड सिंस लेम डोंकीज कुड नो लॉन्गर डू द ट्रिक्स ही वॉज थ्रोन इन टू द सी टू ड्राउन. सो उसके साथ क्या होता है, वो अपाहिज बन जाता है. और जो अपाहिज डोंकीज होते हैं दे कुड नो लॉन्गर डू द ट्रिक्स, तो वो अच्छी ट्रिक्स नहीं परफॉर्म कर पाते और उसको सी के अंदर छोड़ा जाता है, गहराई में छोड़ा जाता है. उसको सी के अंदर छोड़ दिया गया डूबने के लिए. एज इफ by magic, when he hit the water, he changed back into a puppet and was swallowed by a huge whale. How dark it was inside the whale. तो वहाँ पे क्या होता है, एक मैजिक होता है. What happened there? A magic took place, and whenever times he hit with the water he changed back into the puppet. और जब भी वो पानी के साथ जाकर टकराता है वो वापस पपेट बन जाता है और उसको एक वेल अपने अंदर स्वेलो कर लेती है. चिल्ड्रन, स्वेलो मीन्स टू गेट इनटू. और एक बहुत बड़ी वेल उसको अपने अंदर निगल लेती है और वो वहाँ पर जाके देखता है कि वहाँ पर कितना अंधेरा है उस वेल के अंदर. द डार्कनेस फ्राइटेंड पिनोकियो. अंधेरे से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है. He looked around and thought he saw a light coming towards him inside the veil. Sure enough, it was a flickering candle in a green bottle and was carried. He could hardly believe it. Gepetto. तो वो वहाँ पर क्या देखता है, अपने आसपास इधर उधर अपनी आइज़ घुमाकर देखता है. एंड थॉट ही सॉ अ लाइट कमिंग टूवर्ड्स हिम इनसाइड द वेल. और वो सोचता है कि शायद कोई लाइट आ रही है उसकी तरफ उस वेल के अंदर. श्योर एनफ इट वॉज अ फ्लिकरिंग कैंडल इन अ ग्रीन बॉटल एंड वॉज कैरिड. और उसको पक्का पता होता है कि एक फ्लिकरिंग मीन्स शाइनिंग ब्राइटली, एक ऐसी कैंडल जो कि एक ग्रीन बॉटल के अंदर एक ऐसी कैंडल होती है जो बहुत शाइन कर रही होती है. एंड वो इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाता. उसके अंदर कौन होते हैं, गेपिटो. He ran to the old man asking forgiveness. और वो गेपिटो की तरफ भागता है माफ़ी मांगने के लिए. Geppetto had worried so much about Pinocchio that he had set out in a small boat to search for his puppet. गेपिटो उसके लिए बहुत ज़्यादा worried होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं. सो अब पिनोकियो के बारे में, दैट ही हैड सेट आउट इन अ स्मॉल बोट टू सर्च फॉर हिज पपेट. और वो अपने आप को एक स्मॉल बोट में सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो
उस पपेट को फाइंड आउट कर सकें, उसको ढूंढ सकें। और जो वो बोट होती है वो बहुत ही जल्दी एक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। द बोट हैड टर्न्ड ओवर इन अ स्टॉर्म, और वो बोट आंधी में कन्वर्ट हो जाती है। गेपिटो एंड द बोट हैड बीन स्वैलोड इन वन गल्प बाय द वेल। गेपिटो और जो वो बोट होती है वो एक ही झटके में वेल उनको अपने अंदर निगल लेती है। पिनोकियो लेड गेपिटो, पिनोकियो आगे आगे होते हैं, गेपिटो उनके पीछे होते हैं, अप द वेल्स थ्रोट एंड आउट ऑफ हिज माउथ। ठीक है, पिनोकियो गेपिटो को लेके उस वेल के गले में से और माउथ में से बाहर निकल जाते हैं। दे स्वैम टू लैंड, और वो वापस लैंड पर आ जाते हैं। एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी टूवर्ड्स होम। दे मेट द कैट एंड फॉक्स हु बाय नाउ वर ट्रूली ब्लाइंड एंड लेम। नाउ ऑन द वे होम दे मेट cat and the fox, and they were not blind and lame truly. एक्चुअल में अब वो ना तो ब्लाइंड होते हैं ना लेम होते हैं, बट पिनोकियो हैविंग लर्नड हिज लेसन पास देम बाय, क्योंकि पिनोकियो के साथ वो पहले हो चुका होता है तो वो यहाँ से लाइक लेसन सीख लेता है जब वो उनके पास में से गुजरता है। पिनोकियो एंड गेपिटो रीच्ड होम एट लास्ट, और एट लास्ट क्या होता है, पिनोकियो और गेपिटो दोनों घर पहुँच जाते हैं। पिनोकियो केयर्ड फॉर गेपिटो, कुक्ड फॉर हिम, वर्कड, अर्नड मनी एंड स्टडीड। देन पिनोकियो उसकी खूब सेवा करते हैं, उसके केयर करते हैं गेपिटो की, उसके लिए खाना भी बनाते हैं, उसके लिए काम भी करते हैं, उसके लिए लाइवलीहुड भी अर्न करके लेके आते हैं और उसके लिए स्टडी भी करते हैं। गेपिटो बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी वंस अगेन। गेपिटो की जो पोजीशन होती है वो फिर से ठीक हो जाती है। नाउ ही अगेन बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी वंस अगेन। वन नाइट पिनोकियो ड्रेम्ड दैट द गुड फेरी विद ब्लू हेयर एंड द टॉकिंग क्रिकेट केम टू विजिट हिम। एक रात क्या होता है, पिनोकियो को सपना आता है कि क्या सपना आता है कि ये एक फेरी और टॉकिंग क्रिकेट उसको मिलने आते हैं। दे रिमाइंडेड हिम दैट बॉयज़ हु केयर फॉर देयर पेरेंट्स, हु बिहेव एंड टेल द ट्रुथ, हु लर्न एंड बिकम वाइज, विल ऑलवेज गेट अलॉन्ग इन द वर्ल्ड एंड बी हैप्पी। एट लास्ट दे अप्रूव्ड ऑफ पिनोकियो। वो उनको ये याद करवाते हैं कि जो लड़के अच्छे से अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, हमेशा अच्छे से बिहेव करते हैं और जो हमेशा सच बोलते हैं, और वो जो अच्छे से सीखते हैं और वो जो अच्छे बनकर रहते हैं, वो ही हमेशा आगे तक चलते हैं, वो उनका ही साथ बना रहता है। एंड दे ऑलवेज रिमेन हैप्पी इन द वर्ल्ड। एट लास्ट दे अप्रूव्ड ऑफ पिनोकियो, और लास्ट में वो उसको मान जाते हैं। द ड्रीम एंडेड, तो यहाँ पे जो पिनोकियो की ड्रीम है वो ख़त्म हो जाती है। पिनोकियो अपनी आंखें खोलते हैं और आसपास देखते हैं। ही वॉज नो लॉन्गर अ वुडन पपेट, अब वो वुडन पपेट नहीं रहे। ही इज़ नाउ अ रियल बॉय एंड लाइक ऑल अदर बॉयज़, और एक ऐसा ही पपेट उस उनकी साइज़ जैसा सेम पपेट एक कुर्सी पर बिना मोशन के पड़ा होता है। ही रैन टू गेपिटो हु हैड गॉट हिज स्ट्रेंथ बैक एंड वॉज वंस अगेन एट वर्क कार्विंग वुड। तो पिनोकियो लास्ट में गेपिटो की तरफ भागते हैं, जो कि वापस अपने उसी मोशन में आ जाते हैं, अपने उसी पोजीशन में आ जाते हैं, एंड वो अपना वुड कार्विंग का जो काम है वो दोबारा शुरू कर देते हैं। नाउ पिनोकियो वेंट टू स्कूल लाइक ऑल अदर बॉयज़। ही लीड हिज लाइफ इन अ वेरी गुड मैनर एंड हेल्प गेपिटो इन मैनी वेज। सो नाउ Pinocchio and Geppetto became friends. They lived happily ever after, and Pinocchio and Geppetto were very happy and content for the rest of their lives. And वो अपनी ज़िंदगी दोनों खुशी खुशी व्यतीत करते हैं. At last they lived very happily. So children, in this chapter we learned that we should always care for our parents, we should always behave good, and we should always tell the truth, and we should always be wise with our friends and to our elders. Then only we will get along and we will remain happy in this world forever. Thank you.